ಇವತ್ತು ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಅಬುದಾಬಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು. ಬಿಎಪಿಎಸ್ 700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಪಿಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಮಂದಿರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. देख रहे हैं भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है. दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है. तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है. पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समुदाय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है. तो पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है. चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाषा में लिखा गया स्वागतम शब्द दृष्टिगोचर होता है. भारत की यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं. में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं. वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं. और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं. स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है. जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नामाभिधान फेस्टिवल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता का महोत्सव रखा गया है. उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे हैं. भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है. दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, Haribhai.
ಈ ಮಂದಿರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮಂದಿರ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2018 ಅವರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೊರೆ ಹಾಗೆ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ BAPS ನ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಅಬುದಾಬಿ UAE ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಆವರಣವನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. 2014ರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಈ ದೇಗುಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ UAE ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದೇಗುಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇಗುಲವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 7 ರಾಜ ಮನೆತನಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ 7 ಗೋಪುರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಬುದಾಬಿಯ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲದ ಎತ್ತರ 108 ಅಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ UAE ಸರ್ಕಾರ 27 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ BAPS ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ UAE ಸರ್ಕಾರ 27 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಗುಲವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಹ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅಬುದಾಬಿ UAE ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ದೇಗುಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. 30% ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. UAE ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 30% ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬುದಾಬಿ, UAE, ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ದೇಗುಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. As we can see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s. But it was on April 5th, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures and religions closer together. ધર્મ લોકોમાં ભાવના થાય અને ખૂબ બધી રીતે માણસો સુખી બને અને દરેકના ધર્મ ભાવના ખૂબ વધે. એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે. દરેક દેશના મેળો પૂરું કરવું.
जैसे कि हमने देखा, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था, उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की BAPS संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन BAPS संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रण रेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्व प्रतीक मंदिरमिदं संवादिता शांतिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्र इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था, वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहां आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है, उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे।
The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the mandir's creation and through the mandir's completion. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Al Ain. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really a surprise, because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship
whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 6 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी, अर्थात दिव्यता के नयन। हम सब शांति चाहते हैं, पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे। सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे। वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी। सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के नयन की स्थापना हुई है, जहां से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया। This model is a 3D printed model of the mandir and was the same model that was launched by the Prime Minister in the Dubai Opera in 2018. Today, we can see that that dream is now fulfilled in the mandir behind the model. Currently, children from around the world are welcoming the Prime Minister as he walks up to the mandir. The Prime Minister has honored the mandir as a tribute to his own commitment to love, to peace, and harmony. आई ऑफ डिविनिटी से आगे अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी संस्कृतियां नदी के किनारे पर पनपी है, उसका विकास नदी के किनारे के आसपास होता रहा है। तो यहाँ इस मंदिर की संरचना में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं
बह रही है और उसके तट पर ये भव्य BAPS हिंदू मंदिर खड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर पानी नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ मंदिर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नजर में आएगा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर भी चढ़ रही है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे का मर्म समझाती हुई यह रचना, उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहाकर अपनी अंजलि दे रहे हैं। संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे लोक पावनि हे गंगे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगायै नमः। श्री गंगाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी की धारा में जल कलश का सिंचन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत की पवित्र नदी यमुना में अपनी जलधारा बहाने के लिए आ रहे हैं। संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे पूते कालिंदी यमुने जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज है। उनके चरणों में अभिवंदना माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। शब्द सुमनों से स्वागत के बाद अब कलात्मक पुष्पहार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं। इस मंदिर की भेंट देने के लिए, मंदिर का उपहार देने के लिए कृतज्ञता से प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया। महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं।